नाम संकीर्तन की श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavater Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nandagopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhaktarunda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, welcome again for our Friday satsang. Today's Bhagavatam, canto number 1, chapter number 12, birth of Emperor Parikshit. Actually, 2 shlokas Prabhuji told me to take, because last shloka there is no purport. I will be reading and continuing that one. Shloka number 35 and 36. आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अध्याय 12 जिसका शीर्षक है सम्राट परीक्षित का जन्म। तो इससे हम लोग 35 और 36 श्लोक पर प्रभुपाद जी के तात्पर्य से चर्चा करेंगे। रीड श्लोका। अहुतो भगवान राज्ञा यजायित्वा द्विजेन्द्रपम् उवासा कचिन्मासन् श्रुतं प्रियकाम्यया अहुतो भगवान् राज्ञा अजायित्वा द्विजेन्द्रपम् उवासा कचिन्मासन् श्रुतं प्रियकाम्यया अहुतो भगवान् राज्ञा यजायित्वा द्विजेन्द्रपम् उवासा कचिन्मासन् श्रुतं प्रियकाम्यया आहुतो भगवान राज्ञा जयित्वा द्विजेन्द्रपम् उवासा कचिन्मासन् श्रुतं प्रियकाम्यया अहुतो भगवान् राज्ञा यजायित्वा द्विजेन्द्रपम् उवासा कचिन्मासन् श्रुतं प्रियकाम्यया अहुतो भगवान् राज्ञा
Auto Bhagavan Raja. Mataji's Auto Bhagavan Rajan Tata Katichin Masan Suchagamya Auto Bhagavan Rajan Ajayitva Vijayranam Sudam Priyakamya Auto Bhagavan Rajan Ajayitva Vijayranam Pratichin Masan Sudam Priyakamya. Word to word meaning Ahuta, being called by Bhagavan, Lord Krishna, the personality of Godhead, Rajna, by the king, Yaja Itva, causing to be performed, Vijay, by the learned Brahmanas, Nrupam, on behalf of the king, Vasa, resided, Katichit, a few, Masan, months, Surudam, for the sake of the relatives, Priya Kamyaya, the pleasure. Translation and purport by His Divine Grace Abhacharna Ravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. Translation: Lord Sri Krishna, the personality of Godhead, being invited to the sacrifice by Maharaja Yudhishthira, saw to it that they were performed by qualified twice-born Brahmanas. After that, for the pleasure of the relatives, the Lord remained a few months. Repeat after me. Lord Sri Krishna, the personality of Godhead, being invited to the sacrifices by Maharaja Yudhishthira, saw to it that they were performed by qualified Brahmanas. After that, for the pleasure of the relatives, the Lord remained a few months. Purport: Lord Sri Krishna was invited by Maharaja Yudhishthira to look into the supervision of the performance of yajna, and the Lord, to abide by the orders of his elderly cousin, caused the performance of yajna by learned twice-born Brahmanas. Simply taking birth in the family of Brahmana does not make one qualified to perform yajnas. One must be twice born by proper training and initiation from the bona fide Acharya. The once born Sikon of Brahmana families are equal with the once born Shudras, and such Brahma Bandhus or unqualified once born Sikon must be rejected for any purpose of religious or Vedic function. Lord Sri Krishna was entrusted to look after this arrangement, and perfect as he is, he caused the yajnas to be performed by the bona fide twice-born Brahmanas for successful execution. धन्यवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय।
अनुवाद महाराज युधिष्ठिर द्वारा यज्ञ में आमंत्रित होकर भगवान श्री कृष्ण ने इस बात का ध्यान रखा कि ये सारे यज्ञ योग्य विध ब्राह्मणों द्वारा संपन्न कराए जाएं। तत्पश्चात संबंधियों की प्रसन्नता के लिए भगवान वहां कुछ एक मास रहते रहे। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण को महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ संपन्नता का निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया था और भगवान ने अपने अग्रज के आदेशों का पालन करने के लिए विद्वान द्विज ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ संपन्न कराया। केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ही कोई यज्ञ कराने का अधिकार, उचित प्रशिक्षण तथा प्रामाणिक आचार के द्विज बनना होता है। ब्राह्मण कुलों की एक जन्माष्टमी सूर्यों के तुल्य होती है। अतः ऐसे ब्रह्म बंधुओं को किसी ऐसे धार्मिक या वैदिक उत्सव के निमित्त अस्वीकार कर देना चाहिए। श्री कृष्ण को यह प्रबंध देखना था और चूंकि वे परम पूर्ण है, अतः उन्होंने सफल संपन्नता के लिए प्रामाणिक द्विज ब्राह्मणों द्वारा यज्ञों को संपन्न कराया। I will read shloka number 36 also. Tato rajanabhyanu janataha Krishnaya saha bandhubhihi Yayau dvaravatim brahman Srajno yadubir vrutaha. Translation: O Shaunaka, thereafter the Lord, having bade farewell to King Yudhishthira, Draupadi, and other relatives, started for the city of Dwaraka, accompanied by Arjuna and other members of the Yadu dynasty. Thus the Bhaktivedanta purport of the first canto, 12th chapter, the Srimad Bhagavatam, entitled Birth of Emperor Parikshit. हरे कृष्ण। 36वां श्लोक इसमें मानकर अनुवाद है। तो 36वें श्लोक का अनुवाद, हे सौनक, तत्पश्चात भगवान ने राजा युधिष्ठिर, द्रौपदी तथा अन्य संबंधियों से विदा लेकर अर्जुन तथा यदुवंश के अन्य के साथ द्वारका नगरी के लिए प्रस्थान किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत सम्राट परीक्षित का जन्म नामक 12वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. Welcome to our Friday satsang. It is you all very fortunate because it is very early morning. You all are assembling here to hear the Bhagavatam. That means you can see that you are all taste of the hearing, because bhakti means the hearing about the Lord, and that is the way only devotional service will progress. And there where we can see this you all from that what we all are learning.
and Prabhuji is glorifying me, but I am not at all qualified for that. And I am also very much struggling to develop in this devotional service. हरे कृष्णा। तो वापस सभी वैष्णव का स्वागत है और आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आप सुबह सुबह श्रीमद् भागवतम के श्रवण के लिए आए हैं और इस श्रीमद् भागवतम के श्रवण से हम लोग हमारा जो आध्यात्मिक जो जीवन है उसमें हम लोग प्रगति कर सकते हैं। और प्रभुजी अपने बारे में कह रहे हैं प्रमुखता से कि वो इस विषय के प्रति उतने योग्य नहीं है, उनका भी संघर्ष है, वो इस भक्ति के मार्ग में। Also, last week it was that 5 days, which was including national holidays. It started from Nityananda Trayodasi celebration, and then our Ajitananda Prabhuji's association is so nice that that 5 days is very, very unforgettable days for me at least, and it is surely for all of us. पिछले सप्ताह में हमने देखा 5 दिन तक हम लोगों ने नित्यानंद त्रयोदशी का जो त्योहार है वो मनाया और उस समय हमारे समक्ष श्रीमान अजितानंद दास ब्रह्मचारी वो यहाँ पर उपस्थित थे और 5 दिन हमारे कैसे चले गए ये हमको ज्ञात नहीं हुआ। तो ये उनके साथ में हमने 5 दिन बिताए जिसमें यहाँ पर जो छुट्टियां होती हैं नेशनल डे और लिबरेशन डे की वो भी उसमें हम लोगों ने पूरा समय प्रभुजी के साथ में व्यतीत किया। Our Prabhuji's special subject was the Japa Vidhi, because this is Japa is the our topmost priority in our life, in the devotee's life in Krishna consciousness. And the Prabhuji actually from the basics is explained that what many rules and regulations, how we have to follow. And from this, when we are following the rules, this will help us to develop our taste in the japa. प्रभुजी का जो विषय मुख्य रूप से था वो जप विधि थी और उसमें उन्होंने हमको ये सिखाया कि कैसे हमको हमारा ये जो जप है, क्योंकि यही हमारा सबसे प्रमुख अंग है भक्ति का, तो इससे कैसे हम लोग प्रगति कर सकते हैं। तो इस विषय पे प्रभुजी ने पूरा अपना सेमिनार दिया। And even Srila Prabhupada also tells our progress in devotional service is 99% is depends on how we chant the holy name. श्रील प्रभुपाद ने भी ये बताया कि 99% हमारी जो प्रगति है भक्ति में वो इस पर निर्भर करती है कि हमारा जप किस प्रकार हो रहा है। How much offenselessly, purely we are chanting the holy name. कितना अपराध रहित शुद्ध नाम हम लोग जप करते हैं। So all these vidhis, what Prabhuji told, it is surely it will help, and Prabhuji explained that these vidhis we have to try to apply, and then this will support us for our sadhana bhakti. ये जो विधि बताई गई है तो इसको हमें अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा और ये फिर हमको हमारी साधन भक्ति में सहायता करेगी। अभी कोई भक्त लोग मेरे को पूछ रहे थे इतना डिफिकल्ट विधि से अप्लाई करना पड़ेगा क्या? मींस तो अभी किसी का प्रश्न था कि ये इतना कठिन विधि है तो क्या कैसे हमको क्या अपने जीवन में इसको अपनाना पड़ेगा? And asking like Srila Prabhupada is not given all these rules, like that. Then I was explaining, yes, Srila Prabhupada is always telling we have to follow the scriptures. And इसी का ये था कि प्रभुपाद जी ने ये सब नहीं बताया, लेकिन हमको ये ध्यान रखना है श्रील प्रभुपाद ने सदैव ये कहा कि हमको शास्त्रों का अनुपालन करना है। So these all are given in the scriptures, but like that Ajitananda Prabhuji, actually he went through all the shastras very deeply. He given us only essence, and that essence also we need to follow. जो श्रीमान अजितानंद ब्रह्मचारी आए थे तो उन्होंने पूरे शास्त्रों का बहुत गहन अध्ययन किया है और उन्होंने साफ रूप में हमको बताया, तो ये तो कम से कम हमको पालन करने का प्रयास करना चाहिए। And I saw that in many of these whatever he is telling, we know that we have to follow this, but we are not following. That is our shortcoming. तो हम लोग वैसे जानते हैं अंदर से कि हमको इन चीजों का पालन करना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो ये हमारी हृदय की दौर्बल्यता है। So for that, actually, once the Prabhuji is telling, because with his purity, which will really, it is for our heart, it is touching.
And then even I started to follow few of this, his whatever he informed us, and it is surely is helping me to my japa. तो क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं, तो उन्होंने जो भी कहा है अपने अनुभव से उन्होंने कहा है, और जितना भी किया उसमें से प्रभु कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ चीजें उसमें से पालन करने का प्रयास किया है और वो उनको सहायता कर रही है. Like especially, one, because normally I was chanting japa it's little loudly, but when Prabhuji told it's loudly japa means it is nothing but kirtan. When we are chanting the holy name with the meditative mood, like just hear to our ears, just to hear to my ears, and that slow japa is really it is helping. I felt that yes, that is a correct way of doing the japa. तो पहले मैं उच्च स्वर में जप को उच्चारण करते हुए पूर्ण करता था, लेकिन उन्होंने बताया कि हमारा जप इस प्रकार से होना चाहिए कि मात्र हमको वो सुनाई दे, और अभी जब मैं उसका पालन कर रहा हूँ तो वो मुझे सचमुच में सहायता करता है. And because more concentration is possible, because when we are chanting loudly, we'll chant loudly, but when we are chanting with the meditative mood, our mind is really helping us. ये एकाग्रता लाने में ये सहायता करता है. जो उच्च जप होता है उसमें हमारा ध्यान इधर उधर रहता है, लेकिन जब हम लोग बिल्कुल एकाग्र होकर के जप करते हैं तो ये हमको मन को ये वहां पर रखने के लिए ये सहायता करता है. Though that's what we need to follow that these all with this at least as much as possible. तो जितना संभव हो सकता है जो भी हमने प्रभुजी से सीखा है जप विधि में हमें प्रयास करना चाहिए पालन करने के लिए. Now we coming back to the today's verse here, Srimad Bhagavatam, and canto number 1 and chapter 12, birth of the Emperor Parikshit. We already learned, and initially the sages asking questions about birth of the Parikshit, and we heard about all these different slokas from the different devotees, and we came to the final conclusive part here, and where Yudhishthir Maharaj is conducting the Rajasuya Yaga as per the advice of the Krishna. And because actually Yudhishthir Maharaj was he's thinking after the war, because he thinking that because of all killing of these relatives and everything, it is a sinful act, and he was so much of aggravated on that, and for that actually Krishna is advising him to perform this yajna. यहाँ पर हम लोगों ने इस अध्याय में बहुत सारे जो भक्त हैं उनसे श्रवण किया, और अभी ये इस अध्याय का ये अंतिम भाग है, ये सार इस अध्याय का है. तो इसमें युधिष्ठिर महाराज वो राष्ट्रीय यज्ञ संपन्न कर रहे भगवान श्री कृष्ण के कहने पर. तो युधिष्ठिर महाराज ये सोचते थे कि जो महाभारत का युद्ध हुआ है उसमें जितने भी योद्धा मारे गए हैं तो उनकी मृत्यु का कारण वो स्वयं को मानते थे, और इस प्रकार से वो शुद्ध थे अपने हृदय में, और अभी वो इस यज्ञ को संपन्न कर रहे हैं. See, we can actually ask, maybe our questions like, chanting the holy name is enough. Why we have to do this yajna? Because one chanting of the one holy name equal to 1,000 is glorified as 1,000 Ashwamedha yajnas. But हम लोग ये विचार कर सकते हैं कि जो यज्ञ है इनको करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि जो जप विधि है उसमें बताया कि जो जप है वो 1000 अश्वमेध यज्ञ से अधिक उसका फल प्राप्त होता है. But still here, Krishna is advising to Yudhishthir, because Yudhishthir Maharaj is a king. When he is a king, it is a king's what we can call as a his rule he has to perform. He has to perform the yajna for all the people, and that is the one of the vidhi for the king. यहाँ पर हम लोग सोच सकते हैं कि फिर युधिष्ठिर महाराज वो क्यों यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन हमको समझना पड़ेगा कि युधिष्ठिर महाराज वो एक राजा हैं, और राजा की जो प्रजा है तो सभी प्रजा उनका अलग अलग स्तर हो सकता है, तो उनके हित के लिए
और विशेष रूप से जो वैदिक जो ये विधि विधान है, इनको आगे बढ़ाने के लिए ये राजा का कर्तव्य है कि वो उसको संपन्न करे। And even see, king means he has opulences. He has lot of opulence, and when to perform this type of yajna, you need lot of wealth, lot of opulences. Where it is only possible to perform king, not like all other prajas. तो राजा क्योंकि उनके पास में संपन्नता होती है और ऐसे जो यज्ञ होते हैं इनके लिए काफी धन की आवश्यकता होती है, तो सामान्य व्यक्ति के लिए वो संभव नहीं होता है, तो इसके लिए भी ये राजा का कर्तव्य बन जाता है कि वो ऐसे यज्ञ संपन्न करे। Also, once he performed these 3 yajnas, his glories was increased like many-fold. And Krishna want to be Yudhishthira Maharaj's glories to be go in the all over the world. एक और कारण था कि इन यज्ञ को संपन्न करने से युधिष्ठिर महाराज की जो ख्याति है वो सभी जगह कुछ ढंग से उसका प्रसार हुआ, सब लोग उनको जाने। तो भगवान श्री कृष्ण का एक ये भी उद्देश्य था कि युधिष्ठिर महाराज की ख्याति सर्वत्र फैले। And same for us also. It is like when we have money, when we have wealth, we have to use to the Lord's service. Here also he is using to the Lord's service. Same way for us also it is that is chanting the holy name. Yes, it is there as a vidhi, but if you have wealth, we have to support for the service of the Lord. वैसे हमारे लिए भी ये शिक्षा मिलती है कि यदि किसी के पास में वो इस सक्षम है कि वो कहीं पे जो लक्ष्मी है उसको भी वो भगवान की सेवा में युक्त कर सके, तो जब के साथ में ये सबका कर्तव्य बनता है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए हमारे पास जो भी है उसको हम लोग युक्त करें। Srila Prabhupada did like that, because when Srila Prabhupada, when he was going to USA, he has only like 40 rupees, dollars, and once he established this Krishna consciousness, so because of book distribution and other things, he got lot of wealth. But he utilized to build the temples. He built almost 108 temples, which is whatever wealth it was coming, he was again utilizing to the pleasure of the Lord and for the establishing the temples. श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए उस समय श्रील प्रभुपाद के पास में केवल $1 40 के आसपास में था, लेकिन श्रील प्रभुपाद जब फिर अमेरिका में गए उसके बाद में श्रील प्रभुपाद ने पुस्तकों का वितरण किया। उनके प्रचार से उन्होंने जो भी कुछ उनको प्राप्त हुआ, उन्होंने अपने समय में जब तक प्रभुपाद जी धराधाम में थे उन्होंने 108 मंदिरों की स्थापना की, पुस्तकें छापी। तो सारा कुछ जो भी उनके पास में जो धन आ रहा था तो उसको वो भगवान की सेवा में ही युक्त कर रहे। Prabhupada also know that holy name, chanting the holy name is the topmost, and he initially itself 99% depend on holy name. But he may just told and money may be kept for his family and all. No, but he know that whatever wealth we have to use pleasure of the Lord. श्रील प्रभुपाद जानते थे कि हमारी 99% जो भक्ति है वो जब पर निर्भर करती है, लेकिन फिर भी भगवान की सेवा के लिए उन्होंने जो कुछ भी उनके पास में आया उन्होंने सब वो भगवान की प्रसन्नता के लिए युक्त किया। And even Krishna is telling, even in Bhagavad Gita, patram phalam pushpam, means he is telling at least, if means he is not glad if you have wealth, you give with the opulently serve to the Lord. It is not meaning that just give only like he is telling, if you don't have anything, at least you have that one leaf, patram, pushpam, phalam, at least toyam. Finally, he is telling water, at least water we need to survive. He is telling to serve me with this. It's not meaning that wealth is required, but if you have wealth, that also used to serve the Lord, not use this wealth for our own self gratification. श्रील प्रभुपाद जो भगवद गीता में 9वें अध्याय का 36वां श्लोक है वहां पर जो बताया गया है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो भगवान तो ये कह रहे हैं कि मुझे कोई एक पत्र, एक पुष्प या एक फल या अंत में और कुछ नहीं, तो थोड़ा जल भी यदि अर्पित करता है तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि आपके पास में यदि आप समर्थ हैं, आपके पास में भगवान का ही दिया हुआ यदि धन है तो उसको भगवान की सेवा में युक्त करना चाहिए।
And this yajna, again here one more point also we can see actually yajna is even Krishna himself. Krishna is the yajna purusha. Yajna means Krishna. And himself he is telling to perform the yajnas. See, Lord, he himself is telling. तो भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष है, उनका नाम यज्ञ है, और भगवान स्वयं अभी यज्ञ संपन्न करने के लिए निर्देश दे रहे हैं. And see, even he was present there, but he is showing us how we have to follow the Vedic culture and Vedic regulations. भले ही भगवान श्री कृष्ण वो युधिष्ठिर महाराज के समक्ष थे, लेकिन फिर भी वो उनको कह रहे हैं कि जो वैदिक नियम है उनका पालन जीवन में किस प्रकार से करना है. Because once Vedic, see, like, okay, if it is a higher devotees, okay. But if it is like in karma kandis, in the lowest stage of like animalistic stage of human being, for them, if all these rituals of Vedic, if it is doing, that is the purificatory process for them. जो कर्मकांडी लोग होते हैं, जो बिल्कुल पशु की चेतना की अवस्था में होते हैं, उनके लिए ये यज्ञों के विधि विधान, उनकी जो शुद्धि है, उसका ये कारण होते हैं. And if that is like a king of Yudhishthir, and even is a Krishna, if they are not following, then how other people who they will follow? Because this is they are showing a path for them. तो युधिष्ठिर महाराज जो समय पूरी पृथ्वी के राजा हैं और भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहां पर उपस्थित हैं. यदि भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज वो इन वैदिक जो नियम है उनका पालन नहीं करेंगे, तो और लोग उसको कैसे फिर अपने जीवन में अपनाएंगे. Also today's shloka, it is so nicely here writing, the Lord Sri Krishna, the personality of Godhead, being invited to the sacrifices by Maharaj Yudhishthira, saw to it that they were performed by qualified brahmanas, twice born. तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ये जो इसका अनुवाद है उसी में बताया कि महाराज यज्ञ में आमंत्रित होकर भगवान श्री कृष्ण ने इस बात का ध्यान रखा, ये सारे यज्ञ योग्य जिन ब्राह्मणों द्वारा संपन्न कराए जाए. See here again, because Krishna was there, he is inviting. Means it is means invitation means he is inviting Krishna to take care of this yajna, means performance, all these things. He is making him as a first person there, and he is telling Krishna to be take care of this yajna. युधिष्ठिर महाराज वो भगवान श्री कृष्ण को प्रमुख रूप से ये वहां पर निरीक्षण करने के लिए कह रहे हैं कि आप ये जो सारा यज्ञ का जो ये आयोजन है इसको आप निरीक्षण करें. Means all vidhi vidhanas, everything has to be perfectly has to be go. That only Krishna know, because he is the supreme personality of Godhead, and he only put all these rules and regulation, and he only can perfectly guide the their brahmanas to perform this yajna. भगवान श्री कृष्ण क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो वही इन विधानों को सबको बता सकते हैं, और जो ब्राह्मण है वो उनकी सहायता से ही ऐसे यज्ञों को संपन्न कर सकते हैं. And one more point actually here is important is like twice born. It is a brahmana must be twice born. यहाँ पर द्विज जो शब्द आया है ये आवश्यक है कि ब्राह्मणों को द्विज होना चाहिए. And there is one shloka also, it is comes like janmane jayate shudra samskara bhaved dvija veda phatet bhaved vipra brahma janati iti brahmana. Means here it is Prabhupada also writing. I just have some write up Prabhupada's lecture. The real aim of samskara is to bring a rascal to the platform of knowledge. यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत कठोर शब्दों में कह रहे हैं कि यज्ञ का संस्कार का अर्थ है कि जो बिल्कुल अधम अवस्था में है उसको भी एक अच्छी स्थिति तक लेके आ. जन्मने जायते शूद्रा, by birth everyone is the same shudra. जन्म से सभी शूद्र होते हैं. In other words, one is without any knowledge. तो दूसरे शब्दों में सभी लोग अज्ञान में होते हैं. So the purpose of samskara is to gradually bring a person who has not knowledge of spiritual life to spiritual platform. तो जो संस्कार का अर्थ है कि जो अज्ञान में है, जो शास्त्रों की शिक्षा को नहीं जानता है, तो धीरे-धीरे करके उनको उस स्तर तक लेके आना. Further Prabhupada is saying, as it is said, samskarat bhaved dvija.
by the purificatory process, one attains spiritual rebirth. That is essential. तो संस्कारात भवे द्विज की Purificatory process. जो शुद्धि के मार्ग से व्यक्ति वो द्विज के स्तर पर आता है और जो सबके लिए बहुत आवश्यक है. And then further is like, when means the purificatory process means one person who is born as a Shudra, then he is taking, guidance of a spiritual master and taking initiation from him and following the samskaras, then he becomes Dvija. शूद्र यदि कोई शूद्र का जन्म हुआ है तो गुरु के निर्देश में यदि उनके बताए हुए निर्देशों का पालन कोई करता है तो धीरे धीरे करके वो द्विज के स्तर पर आता है. Once he is Dvija, then when he learn in the guidance of the spiritual master to study of the Vedas. तो गुरु के निर्देश में द्विज बनने के बाद में वो धीरे धीरे करके वेदों का अध्ययन करता है. Then he will read these slokas and everything through this guidance. He will able to read the Vedic mantras properly, and then they call him as a Vipra. धीरे धीरे करके वो गुरु की जो सहायता है उससे वो शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, धीरे धीरे मंत्रों का उच्चारण करेंगे और इस प्रकार से फिर वो योग्य बनते हैं यज्ञ करने के लिए. Then finally that sloka tell is Brahma Janati Brahmana, means he will understand properly who is Supreme Personality of God and what he has to perform, and all this Vedas, Veda is a survey, Aham Veda Veda, Krishna is telling. We have to understand from all this Veda, Krishna is the Supreme Personality of God, and we have to serve only Krishna. And that's why that is the person is always, he is understand the completely about the Supreme Personality of Godhead, and he is called as a Brahmana. यहाँ पर फिर अंत में जो आया ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण, तो इस प्रकार से वो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है ये जानते हुए और जो वेदों का पूरा पालन करते हुए तो वो योग्य बनता है, उसे ब्राह्मण कहते हैं. जो ये जानता है कि मैं जीवात्मा हूँ और भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है. तो जैसे 15वें भगवद गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भी ये आता है, तो ऐसा जो व्यक्ति है जो वेदों की शिक्षा से वो भगवान को समझता है तो वो ब्राह्मण होता है. And that person is is responsible to perform this yajnas because he know everything. That everything has to be performed to the Krishna for his pleasure. And when he is performed this the Vedic mantras and with this, that will be that success of that yajna will be guaranteed. ऐसे जो ब्राह्मण के स्तर पर पहुंच जाते हैं फिर उनका ये कर्तव्य होता है कि वो इन यज्ञों को संपन्न करें और उनके द्वारा ये यज्ञ जब संपन्न किए जाते हैं तो ये भगवान के द्वारा फिर स्वीकार किए जाते हैं. That's why Prabhupada is purport writing, Lord Sri Krishna was invited by Maharaj Yudhishthira to look into the supervision of the performance of yajna, and the Lord, to abide by the orders of his elderly cousin, caused the performance of yajna by learned twice born Brahmanas. This was Krishna is guiding only this whoever Brahmana, they have to be went through all these vidhis. Twice born Brahmana, that's what called. यहाँ पर श्रील प्रभुपाद अपना तात्पर्य प्रारंभ कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण को महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ संपन्न का निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया था और भगवान ने अपने अग्रज के आदेशों का पालन करने के लिए विद्वान द्विज ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ संपन्न कराया. And Prabhupada further strongly writing, simply taking birth in the family of Brahmanas does not make one qualified to perform yajnas. तो श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बहुत कठोरता पूर्वक लिख रहे हैं कि ब्राह्मण कुलों की एक जन्मा संतानें शूद्रों के तुल्य होती रहता, वैसे ब्रह्म बंधुओं को किसी धार्मिक या वैदिक उत्सव के निमित्त स्वीकार करना चाहिए. And उसके पहले वो कहते हैं कि केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ही कोई यज्ञ कराने का अधिकारी नहीं बनता. yeah, this one actually even Krishna is telling in the Bhagavad Gita itself, Chaturvarnya Mahashishtam Guna Karma Vibhagasya. He is telling that he only created this 4 varnas and 4 ashramas, and as per the guna and karma, as per his quality and activities,
As per that, it is society should be divided. भगवान श्री कृष्ण वो भगवत गीता में स्पष्ट करते हैं, चौथे अध्याय का 13वां श्लोक है, उसमें कहते हैं कि चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, क्योंकि मैंने 4 वर्ण 4 आश्रम का जो विभाग है वो मैंने गुण और कर्म के आधार पर किया है। It is not like, that's what Prabhupada is writing, just not like a birthright. It's I took a birth in a Brahmana, as a, we know Brahmana, different surnames. On that basis, you become a qualified Brahmana. No, it is scripture not says like that. यहाँ पर प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं, तो शास्त्र में ऐसा नहीं कहते ब्राह्मण कुलों की एक जन्म संतान शूद्रों की कुल होता है, वैसे ब्रह्म बंधुओं को किसी ऐसे धार्मिक या वैदिक उत्सव के निमित्त अस्वीकार करना चाहिए। तो इसका अर्थ है कि कोई मात्र किसी परिवार विशेष में जन्म लेने से योग्य नहीं बन जाता है, ये योग्यता उनके गुण और कर्म से प्राप्त होती है। The one more point, actually, when they're taking birth from that family, yes, certainly it will help them to develop the qualities. But it is not meaning that he become a vice Brahmana. ये स्वाभाविक होता है कि कोई किसी विशेष परिवार में यदि जन्म लेता है तो जो पारिवारिक जो संस्कार है वो उसके अंदर में अवश्य आएंगे, लेकिन यही मात्र एक आधार नहीं है कि कोई उसी से किसी पद के लिए योग्य बनता है। But it should be followed with this like Vedic this one. That's what that as per this shloka we have to follow. तो आवश्यक है कि वेद के जो निर्देश है उनके आधार पे कोई यदि अपने जीवन में पालन करता है तो वो योग्यता देखी जाती है। That's what Prabhupada is. One must be twice born by proper training and initiation from the bona fide acharya. इसलिए श्रील प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण को उसे समुचित प्रशिक्षण तथा प्रामाणिक आचार्य से दीक्षा ग्रहण करके द्विज बनना होता है। And Prabhupada further write, the once born Sikhan of Brahmana families are equal with the once born Shudras, and such Brahma bandhus or unqualified once born Sikhans must be rejected for any purpose of religious or Vedic function. इसीलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ब्राह्मण कुलों की एक जन्मा संतान शूद्र के तुल्य होती है, अतः वैसे ब्रह्म बंधुओं को किसी ऐसे धार्मिक या वैदिक उत्सव के निमित्त अस्वीकार कर देना चाहिए। Because we can see in India actually, even I know from my family background or whatever, like in India, it's like at present age, all these yajnas, whatever they're performing, it is like a business. Because it's Brahmana, when you're performing any yajna, he no need to ask anything. If they've given something, charity, they can take. Otherwise, not to take anything. But in India at present, because they don't have the scriptural knowledge completely, they just, it is like a business. If for this yajna, this much 1,000 rupees, this 1,000 rupees, like this. If it is too much money they're asking, that means that Brahmana is very good. तो आजकल हम लोग देख रहे हैं कि भारतवर्ष में ऐसा हो रहा है कि लोग योग्य नहीं होते हुए भी उन्होंने इसको अपना एक धन अर्जन करने का माध्यम बना दिया है, व्यापार जैसे बना दिया है, और उन्होंने कुछ ऐसे धन राशि को तय करते हैं कि यदि आप ये इस प्रकार का कोई यज्ञ संपन्न कराना चाहते हैं तो इसके लिए इतना धन खर्च होगा, और जो जितना ज्यादा धन वो मांगता है तो उसको लोग उतना योग्य मानते हैं कि वो एक अच्छा ब्राह्मण है। Even these Brahmanas, they whatever the few mantras says, depending on the money. If you give more money, they will chant more mantras. If you give less money, it's less mantras. That whatever the yajna performs, it goes faster. But if you pay more, that yajna will be longer. तो प्रभु बता रहे हैं कि आज की स्थिति ऐसी है ब्राह्मणों की कि वो धन के आधार पे मंत्रों का संख्या भी उनकी रहेगी। आपने ज्यादा धन दिया है तो ज्यादा मंत्र पढ़ेंगे, कम दिया है तो कम पढ़ेंगे, तो वो उसमें ही थोड़ा चल रहा है। So this type of degraded age, there is no, that's what Lord himself, this Kali Yuga is age of quarrel and hypocrisy, and it's so much degraded. In this age, this performing this yajnas, which is like this type of brahmanas, there is no benefit. भगवान स्वयं जानते हैं कि ये कली का समय है और इसमें सभी लोग कोई योग्य नहीं है, जैसे प्रायण अल्पायस सभ्य कला वस्तु युगे मंद सुमंद होते मंद भाग्य युग,
भाग्यमंद है वो पद, सब लोग अशांत हैं। तो भगवान स्वयं जानते हैं कि इस कलयुग में ऐसे यज्ञ संपन्न करवाने ये संभव नहीं हो पाएंगे। That's what Lord himself telling. Kritetad Hari Kirtanas means only in the Kali Yuga, only chanting the holy name and Kirtan and this Yajna, Kirtana Yajna, only that is the beneficial. तो भगवान ये श्रीमद् भागवतम में आया है कि कृतो यद ध्यातो विष्णु त्रेतायाम युगतो द्वापरे प्रचलयाम कलौ तत् हरि कीर्तन, कि जो विधि सत्य युग में जो ध्यान करने से था या जो अन्य समय में यज्ञ करना या मंत्रों की सेवा करने से, कलयुग में वो मात्र हरि कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। And that is very simple. And that kirtan, whatever we are telling japa or mahamantra chanting, it is very, very simple. You no need of anything, any vidhis or anything. Even in Sishtastakam, Chaitanya Mahaprabhu is instructing. Because in the second verse, Nam Makari Bauda, Nija Sarva Shakti, Tatrarpita Niyamita, Smaranena Kalaha, means he is telling there is no rule for this Harinam. Anytime, anywhere you can chant, and that benefit we will be getting. इस कलयुग के लिए ये जो महामंत्र है, इसका अनुमोदन है। जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु उन्होंने भी आकर के ये बताया कि ये जो हरिनाम है ये सरल है और सरल के साथ में ये सर्वोत्तम भी है। और भगवान चैतन्य वो स्वयं के शिक्षाष्टक में कहते हैं कि इसके लिए कोई समय का कोई बंधन नहीं है। आप शुचि है, रुचि है, किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में आप इस महामंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। And even this purpose of the human life is to, like science of Krishna consciousness. But this one only is possible in the Kali Yuga is the chanting the holy name. मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो भगवत प्राप्ति है और इस कलयुग में ये मात्र जप के द्वारा, कीर्तन के द्वारा ही संभव है। And Prabhupada initially, that's what I was reading, because the samskaras means a purificatory process. Only in the Kali Yuga, is the chanting the holy name itself is a purification process. तो कलयुग में ये जो जप की विधि है ये स्वयं में शुद्धि की एक प्रक्रिया है। Therefore, we no need to do any other yajnas because of the age problem. We no need to perform any other yajnas. Just performing this kirtana yajna is enough. इस कलयुग की जो स्थिति है, इस कलयुग की स्थिति में किसी भी और यज्ञ का अनुमोदन नहीं किया गया है। इस युग में ये हरिनाम संकीर्तन यही अपने आप में पूर्ण है। And that's what further here Prabhupada write. Lord Sri Krishna was entrusted to look after this arrangement, and perfect as he is, he caused the yajna to be performed by the bona fide twice-born brahmanas for successful execution. तो श्रील प्रभुपाद अपना जो तात्पर्य है उसके अंतिम पंक्तियों में लिख रहे हैं कि श्री कृष्ण को यह प्रबंध देखना था और चूंकि वे परम पूर्ण हैं, अतः उन्होंने सफल संपन्नता के लिए प्रामाणिक द्विज ब्राह्मणों द्वारा यज्ञों को संपन्न कराया। Same way, Chaitanya Mahaprabhu also, he come to this Kali Yuga as Sri Krishna comes as a Chaitanya Mahaprabhu in this material world, and he propagate this Kali Yuga dharma. भगवान चैतन्य वो श्री कृष्ण जो स्वयं भगवान चैतन्य के रूप में आए, तो उन्होंने ये जो संकीर्तन यज्ञ है इसका प्रसार किया पूरे इस पृथ्वी में। Yeah, same like here Krishna is taking care of this yajna. Chaitanya Mahaprabhu also, same thing. He was propagated this Yuga Dharma of Kali Yuga, and himself he come and given us. जैसे भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे इस यज्ञ को संपन्न करा रहे, वैसे ही वो जब महाप्रभु के रूप में आए तो उन्होंने स्वयं ये जो युग धर्म है इसका प्रसार किया। And that is how it is teaching us in the Bhagavatam, and how we have to perform as per the scriptures. तो भागवतम हमको यही बता रहा है कि कैसे शास्त्रों के विधि विधानों से हमको इस संकीर्तन यज्ञ का पालन करना चाहिए। And it is very simple. We have to only take faith on this holy name, and we have to start this chanting the holy name process. ये बहुत सरल है और सर्वोत्तम भी है। हमको मात्र ये जो जप है इसको हमें अपने जीवन में अपनाना है।
and then we have to associate with the devotees. We have to get more and more understanding of this holy name, and we have to more and more dive into this chanting the holy name. तो हमें साधु संग करना है और ज्यादा से ज्यादा जप के बारे में जानना है, और इस जप विधि में जितना संभव हो उतना हमको अपनी क्षमता से इसके जो शुद्ध नाम है उसकी तरफ आगे बढ़ना. Because we tell it's a devotional, means it's a service. But chanting the holy name itself, it's a service to the Lord for His pleasure. तो जैसे डिवोशनल से हम लोग भक्तिमय सेवा कहते हैं, तो जप भी अपने आप में सेवा है भगवान की प्रसन्नता के लिए. And even see, we have many sevas, correct? Many sevas when we are young. We can do many sevas. But sometimes this sevas, if somebody, another person because he is performing better than me, that may be given to him. I may lose that seva. But this chanting the holy name, that is for me personal. No one can take away from us. तो हम लोग भक्तिमय सेवा कहते हैं, तो सेवाएं बहुत होती हैं. तो जब कोई हमारा शरीर युवा होता है तो उस समय हमारे अंदर में क्षमता होती है बहुत सारी सेवाओं को करने के लिए. कुछ सेवाएं ऐसी होती हैं आप यदि उसको संपन्न कर रहे हैं, लेकिन कोई और जो भक्त आता है यदि वो आपसे अच्छे से कर रहा है वो सेवा वो कर सकते हैं. लेकिन जो जप की सेवा है ये हमारी व्यक्तिगत है, तो ये हर कोई व्यक्तिगत रूप से इस सेवा को भगवान की प्रसन्नता के लिए इसको संपन्न कर सकता है. Therefore, in this, like when we got this time, we have to understand this holy name much more, and we have to dive down, and we have to take more faithfully chant the holy name without any offenses, and we have to practice it, because in the later stage of old age we will not may get any other service. We have only this service. If it is we are not developed the taste to chant the holy name, surely we will struggle that time. हमें बहुत श्रद्धा से और अपराध रहित अपना जो जप है इसको संपन्न करना चाहिए. तो कभी जीवन में ऐसी स्थिति आ सकती है जब हम लोग अन्य कोई सेवा करने में सक्षम न हो, तो उस समय भी ये जप हमारी सहायता करेगा, और यही एक मात्र हमारे साथ में ये हर समय ये जप की जो सेवा है ये हमारे लिए उपस्थित रहेगी. And that is the what here also it is further one more point was in this shloka. After that, for the pleasure of the relatives, the Lord remained a few months. तो जो अनुवाद है उस अनुवाद में ये दिया गया है कि तत्पश्चात संबंधियों की प्रसन्नता के लिए भगवान वहां कुछ एक मास रहते रहे. Because Krishna is the friend of all this. He is Surudam, means he is the friend of all the living beings. Surudam Sarva Bhutanam. He is the friend of all the living entities, and he know that his all these relatives, they are, because of after war, they are all feeling very bad about the killing of all these relatives. That's what he stayed with them few days for their pleasure. See, Krishna is a Bhaktavasala. For pleasure of his devotees, he stayed there with them for few more days. That's what he is called as a Surudam. No one else we can call as a Surudam. क्योंकि भगवान सुहृद सर्वभूतानां है, तो भगवान सभी जीवों के प्रति सुहृद है. तो यहाँ पर जब युधिष्ठिर महाराज और अन्य जो लोग हैं, जब उनके जो संबंधी हैं वो इस युद्ध में मारे गए, तो वो लोग क्षुब्ध थे, उस समय दुखी थे. तो उस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण वो वहां पर उनके साथ में रहे, और उस समय तक उन्होंने वहां पर रुक करके और उनको भगवान ने सहायता की उनकी, जिससे कि वो उस स्थिति से बाहर आ सके, और उसके लिए भगवान उनको ये यज्ञ की विधि और इस प्रकार से सब बता रहे. And even Surudam means, he is who's a well-wisher of the Jiva, because that person only is Surudam. Like even like this our Asimananda Prabhuji came, he is also like a Surudam, because he no need to come to Kuwait, but he is visiting us, and he is giving all this vidya of the Japa Vidhi. That means he is a Surudam, because he is well-wishers of us. He want to be this Jiva to be, after this body perishes, it has to go back to Supreme Personality of Godhead. That is the ultimate goal we have to achieve. For that, this Surudas actually teaching on that basis.
तो भगवान के लिए सुहृद कहा गया है और भगवान के जो भक्त होते हैं वो भी सुहृद होते हैं। तो जैसे अभी जो ब्रह्मचारी आए थे श्रीमान अजितानंद प्रभु, वो भी सुहृद है। उन्होंने ये जो जप विधि है उसको बताया जिससे कि हर कोई जीव वो इस शरीर के छूटने के बाद में वो वापस भगवान की सेवा में स्थायी रूप से जा सके। Though Suruda means he is a well-wisher. Well-wisher means who is supporting us for in our journey of Krishna consciousness. सुहृद वो है जो हमारी ये जो कृष्ण भावना भावित जो यात्रा है इसमें जो हमारी सहायता करते हैं। Because he know properly about Krishna, about all this tattva of the Krishna, and he only can guide us. क्योंकि वो कृष्ण तत्व को जानते हैं, वो स्वयं उसको वो उन्होंने आत्मसात किया है और वही अन्यों की सहायता कर सकते हैं। And that's what we also should be Suhridam. That's what here is guiding this principle. Means we also have to be Suhridam, and we learn this knowledge of Krishna consciousness. Then we have to distribute this knowledge. तो हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हम भी दूसरे जीवों के प्रति सुहृद बने। उसके लिए हमें ये जो कृष्ण भावना भावित जो ये ज्ञान है, ये जो भक्ति का जो शिक्षा है, इसको समझने का प्रयास करना चाहिए और उसके बाद में दूसरों को भी ये वितरित करना चाहिए। Because just be giving, like when we are going India to a few chocolates or few dates, this is nothing, it will help them maybe few minutes happiness. But when we distribute this Krishna consciousness to them and in our relatives or any whatever possible from our side, that is will be there for them, is eternally stays. जैसे कोई कुछ जो वस्तु है इस संसार की वो आप किसी को देंगे, बच्चों को चॉकलेट देंगे, किसी को कुछ आपने दे दिया तो ये थोड़े समय के लिए उनको कुछ वो वस्तु सहायता करेगी। लेकिन ये जो भगवत विषय और भक्ति का जो विषय है, यदि हम लोग किसी को देते हैं तो ये उनके जीवन में अस्थायी लाभ देता है। That one sentence I will read the previous slokas, last paragraph. And to save them all, Sri Chaitanya Mahaprabhu proposed Sankirtan movement or yajna for all practical purpose. And the people of the present age are strongly recommended to follow this sure and recognized path. That's what Prabhupada is writing. ये जो 34वां श्लोक है, इसके पहले वाला श्लोक यज्ञ का विधान किया था और आधुनिक युग के लोगों के लिए इस निश्चित तथा संस्तुत मार्ग का अनुसरण करने के लिए पुरजोर संस्तुति की गई है। And this is the what today's shloka what is explained here, and especially about Dvija Bandhus and about Surudam. And I tried my best to discuss these 2 points. यहाँ पर विशेष रूप से द्विज बंधु और सुहृद ये इसमें है। तो इस प्रकार से ये जो आज का श्लोक है इसका जो तात्पर्य है उसमें से ये चर्चा आज पूजी करने की मैंने की है। And the last shloka is just after this everything finished, Krishna is leaving to Dwaraka. अंतिम जो श्लोक है उसमें ये बताया गया कि ये सारी चीजें संपन्न होने के बाद में भगवान श्री कृष्ण भी द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। And everybody is like accompanied by Arjuna and other members of the Yadu dynasty. They are farewelling the and Yudhishthira also to Krishna. तो अर्जुन और कुछ जो सैनिक हैं युधिष्ठिर महाराज के, उनके साथ में वो भगवान के साथ वो भी प्रस्थान करते हैं भगवान को विदा करने के लिए द्वारका के लिए। And next chapter is a very nice chapter where Dhritarashtra quits home. This is very, 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 very instructive for us because for many of our grahasthas it is very instructive coming chapter. Please attend the week after week and take the taste of this Bhagavatam. तो अगला जो अध्याय आने वाला है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें धृतराष्ट्र द्वारा ग्रह त्याग, तो हम सब लोग भी धृतराष्ट्र हैं। नहीं, धृत का मतलब कि जो बहुत मजबूती से, राष्ट्र मीन्स की जो इस संसार के प्रति जो आसक्ति है, हर कोई व्यक्ति जिसकी आसक्ति अपने परिवार से और इस संसार की जो वस्तुएं हैं उससे है, तो धृत मतलब बहुत मजबूती से जिसने राष्ट्र के प्रति जिसकी आसक्ति है वो धृतराष्ट्र।
तो हमको सबको देखना चाहिए कि हम लोग कितने आसक्त हैं, और ये हमको सिखाएगा कि कैसे जो धृतराष्ट्र है वो किस प्रकार से वो मुक्त हो पाए इन परिस्थितियों से। तो ये हम सबके लिए शिक्षादायक होने वाला है। हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर प्रभु जी विराम दे रहे हैं आज की कथा को। तो या ओके, हम लोग कुछ किसी की जिज्ञासा है